हम लोग रूप की जो हमने स्टडी की उसको रिव्यू कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। तो हमने सत्ताठान सूत्र के 4 आयाम ठीक से दोबारा से रिव्यू करके समझने का प्रयास किया। अब उसके आगे के जो 3 आयाम हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। they have discussed it but probably didn't discuss it in great detail, और उसके ऊपर इंडिविजुअल चर्चा शायद नहीं की थी जहाँ तक मुझे याद। तो पहले 4 आयाम के बाद क्या अगले आयाम क्या है? एवं रूपस्य अस्सादं अभिन्याय, एवं रूपस्य आदिनवं अभिन्याय, एवं रूपस्य निस्सरणं अभिन्याय, रूपस्य निवृत्ताय विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुपटिपन्ना। देखिए कौन अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा है, उसके जो डेफिनेशन दे रहे हैं, वे लोग अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं। कौन? जो कि वो 4 आयाम और ये 3 चीजों को ठीक से समझ रहे हैं, अभिन्याय, गहराई से समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? रूप के अंदर क्या आस्वादन है, ग्रेटिफिकेशन, और उसमें क्या खतरा है, डेंजर, आदि नवम, और उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है। तो रूप के प्रति जो रूप का जो हमारे पर बंधन है, उस चंगुल से मुक्त होने का क्या तरीका है, ये समझ रहे हैं। और बेसिकली तात्पर्य क्या है? वही जो रूप के आधार पर सुख मिलता है उसका आस्वादन करने लगते हैं, और क्योंकि वो अनित्य है और उसके प्रति आसक्ति होती है तो दुख होता है, तो वो उसमें खतरा है क्योंकि वो विपरिणाम धम्म है, वो बदलता रहता है और उसको समझते नहीं है तो हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो रूप से आदि नव का मतलब यही है कि हम उसके अंदर अनित्य बात को समझते हुए वी ट्राई टू कीप बी कॉशियस। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूप से दूर भागेंगे, वी अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ दैट सेंसरी सेटिस्फैक्शन। और फिर उसको दूर कैसे करना है? छंद राग विनयो छंद राग बहानम। उसके प्रति जो हमारा चूज करते हैं हम सेंसरी प्लेजर्स को, शरीर के आधार पर प्लेजर्स को, उसको दूर करना है, उसका प्रहान करना है। ये निस्सरना, दिस इज कॉल्ड द एस्केप फ्रॉम द रूपा। तो ये हमने जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने चर्चा की थी इसकी, लेकिन आप इंडिविजुअल डिस्कशंस हमने अपने अनुभव के आधार पर शायद नहीं किए थे। तो मुझे लगता है वो भी करना महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसको अब हम काफी समझ गए रूप के बारे में, तो इट शुड बी पॉसिबल टू डू दैट। तो मैं अभी ब्रेकआउट रूम बना देता हूँ एंड वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग देयर दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ओके, कि हम एक्चुअली आइडेंटिफाई, और उसमें मैं कहूँगा पहले हम 10 मिनट शांति से ध्यान करें हर एक ग्रुप में, so that we collect our minds and we can recollect कि किस किस रूप के प्रति हमारा आस्वादन की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग अभी भी बनी हुई है ना? और क्या हम उसके अंदर डेंजर को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मटेरियल रूप से मतलब मटेरियल फिनोमेना, उसमें हम डेंजर को देखते हैं जैसे भगवान सिखा रहे हैं हमको। और क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिनके प्रति हमने राग छाग छोड़ दिया है, राग समाप्त हो गया है, दैट बी ग्रेट सेंस ऑफ जॉय। चलो कुछ तो कम हुआ, एक पर्टिकुलर मटेरियल फॉर्मेशन के प्रति तो हमारा राग छूट गया, समाप्त हो गया, तो उससे तो एस्केप हो गई। बाकी बहुत है, उससे भी करेंगे। और अगर करना है तो ये राग क्यों नहीं छूटता, फिर उसके आगे तरीका सोचेंगे, तो दैट विल कम इन द फ्यूचर। बट एटलीस्ट वी आइडेंटिफाई कि हाँ इसके प्रति जो है अभी भी we still have desire and greed for this particular form of material phenomena. So each of one of us will sit quietly in our groups for 10 minutes quietly, first calming down the mind and then recollecting our own life stories. कहाँ कहाँ पे हमको रूप के प्रति आ गए, and then we can share and in the small group have discussion on that to try to understand that. Okay, is it clear? So this is what we would suggest we do it.
मैं भी ब्रेकआउट रूम बना देता हूँ जितने भी हैं। धर साहब, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि मे बी फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस अगर आप इन तीनों का उदाहरण दें, देन मे बी इट इज मोर हेल्पफुल, स्पेशली बियॉन्ड बॉडीली फॉर्मेशंस का अगर आप कुछ बताएं ना, देन इट माइट बी हेल्पफुल. बियॉन्ड, अदरवाइज kaya, beyond just the body in terms of we are talking of रूप in the sabbam roopam. yeah, I understand, but if you could now give us a specific example from your own experience, for example of aswadan and then danger and then whatever, whichever way it goes. So अगर आप एक करके हमें दिखा देंगे, then maybe we'll be able to do it much better. Otherwise we might waste a lot of time beating around the bush. जी जी. So Sorry, I mean, I didn't mean to recall. put you in a spot, but before the groups it might be more helpful. Surely. There's no. Only thing is that it's not. It will take me some time to recall which Rupa is still holding some grips on me. I mean, I'm not trying to be kind of bombastic, but मेरी प्रॉब्लम दूसरों में ज्यादा है, खासतौर पर परसेप्शंस पे. So, but I'll give me a minute and I'll come to that also. So we can sit quietly in that meanwhile and do what that's That'll be good. Okay, let us do 10 minutes of silent sitting together. Yeah. And then we'll go to it. Fine, very good.
Yes. Let me see. I really couldn't. Something would have happened in my life. It may sound very strange and weird, but whenever I liked something, I had some tendency of aswadan or gratification in anything. Sooner than later, it will disappear from my grip. Whether it be a small thing like a pen. I remember as a child, I used to have great fascination for pens. And the one which I really liked, and I went to college with that and lost. Felt a bit bad about it, and happened a few times, and then ultimately it's go ahead with it. No need. Just take the barest minimum, simplest functional stuff and forget it. It wasn't really. It wasn't arising out of understanding of danger, but the experience of loss of what you like. And it happened again and again. There was a pen in this long back, I'm talking of 50, 45 years back. Then some pant which I liked. And that just the moment this thought came, it's really good. And from our house, it was it was being in the ground, the terrace, it was being kept for sun drying, and somebody took it away. And for quite some time, I felt bad. And this happened one or two times more till I said, there's no point in all that. Just use the clothes as a functional device. And of course, not that we try to dress shabbily or anything of that kind. So I don't recall exactly anything where I could have sensed the danger in this, because the separation took place much earlier than I could sense the danger. Somehow it is maybe my karma or whatever. I liked my elder son very much, and he got separated. And of course, that was quite a challenge for some. I mean, not in the sense of separation from him, but in the sense of the guilt which was kind of thrown at me by well-wishers. So the issue of gratification and seeing the danger in gratification, it almost happened as a consequence of the manifestation of the impermanence of the stuff. So whether it is a small thing like a pen or a pant, or a very major thing like a son. So the fact that you lose him, then you realize that, what the hell is going on in this life? So it has somehow not gone according to the textbook procedure. It has happened the other way around. So that's all I can say. I'm not really. I tried to see if there is anything which really grips my attention, any material thing which grips my attention now, and which I really want or which I really would like to enjoy. In that limited time, I couldn't figure out anything. So it sounds arrogant. So, but in fact, in the morning when I was thinking about it, that if I have to put down, and I said, I can't really put down. And if somebody asks me, I'll have to say this. And here is Banteji putting me on the spot. Said it sounds very arrogant that, there's nothing. But that's the way it is. तो हम जब अपने एक्सपीरियंस को देखने की कोशिश करते हैं, तो जो आस्वादन वाला एलिमेंट है उसको हमें Focus इधर में you have to bring that in the focus. For example, what I did, in the morning also, and now also, I just sat down. My mind is usually calm. Okay, is there anything which I really wish, any material entity which I really wish
I couldn't figure out anything really, in which I could get satisfaction and joy. So that's the question to ask. Yeah. मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना कि what do I look for? मैं आस्वादन कहता हूँ, it's like a vague word. What gives me gratification? जिससे मुझे खुशी मिलती है. The description given in the sutta is quite clear, I think. Let me read it out. The pleasure and happiness that arise from rupa is the gratification. So अगर material form, कोई भी किसी भी तरह की material form मुझे सुख देती है और मुझे उससे satisfaction मिलता है, then I identify, yeah, this is something, and not just momentary, but it is continuing for a substantial amount of time. It continues to be, or it remained in past for a long time, or it is continuing to be now. Then I could say, yeah, this is something which gives me gratification. And then I can reflect, am I able to see danger in that gratification? Okay, wait. So आस्वादन का जो है, this now obviously pertains not just to like physical bodies. Now this pertains to everything in the material domain, Right. है ना? Yeah. तो हमें उस angle, so for example, Mm. smells, just as a difficult example, है ना? That still holds, isn't it? Yeah, I would suggest that those things we put it in Vedana and others. Smell and शब्द and others. वो उसका impact वहाँ ज़्यादा महसूस होता है, because there we can identify the root. Here I would put it, we say the usual solid material entities, my clothes or my cars, my food or car or computer or laptop or whatever, or by people. You know? Some people are very friendly and they give me great joy. Whenever I'm sitting with them, I get great joy. And I don't recognize the danger inherent in it, because like this, the things can change. Okay, so आस्वादन तो ongoing वाला है, current वाला है. अब ये जो danger वाला element है, that is more, Reflected. yeah, right. That is our reflection, because the very fact that Aswadan is going on is because we are not seeing the danger in it. It is that which prevents us from giving up the third thing. Nisarana जो है ना, Nisarana में बात हुई है छंद राग विनयो, giving up desire and greed for that, dropping it all together. That is not happening because we are not seeing the danger. Danger नहीं देखते तो कोई क्यों छोड़ेगा उसको? अगर वो danger हम देखने लगे रूप में, इनफैक्ट किसी भी खंड में, अगर हम उसकी ग्रेटिफिकेशन में डेंजर देखने लगे तो उसको छोड़ना की एक भूमिका बन जाती है. डेंजर नहीं देखते तो we carry on with it unless it brings about a huge danger कि डायबिटीज ही हो गई, जो प्रिय था वो छूट चला गया, उसकी डेथ हो गई, that's a catastrophe. Then you realize then his getting detached has no meaning. Then it's basically suffering and told. So ये जो भगवान की शिक्षा जैसे मैं समझता हूँ कि हमको ये तीन एलिमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई क्या है, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करें कि क्या उसकी अनित्यता को हम जानते समझते हैं, क्या हम समझते हैं कि इसके प्रति अटैचमेंट के कारण दुख होगा. सामान्यता अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट के कारण दुख होगा ये भाव आता ही नहीं है. ये बहुत मुश्किल है ये भाव आना. Okay, so once जो ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे उसमें क्लियर हो जाते हैं, फिर हम ये फिल्टर उस पर लगाएं, द फिल्टर की ये इसका जो इम्परमानेंट नेचर है और दैट इज उसमें डेंजर है, उसको वी कैन यूज दैट वर्ड, इट्स वेरी पोटेंट वर्ड आदिना. इट इज अ डेंजर इन दैट, because once we say this is a danger, then we are motivated to find a way out, escape from the danger. Then we go to the निस्सरना कि भाई ये अटैचमेंट जो है, ये जो ग्रेटिफिकेशन करने की टेंडेंसी है, ये अटैचमेंट क्रिएट हो रही है, इसको हमको ड्रॉप करना है. सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. सो दैट opens up the gateway for practice. Give it up. That's how I understand it, and it makes me pretty convincing argument that this is the way for freedom. और जो निसरण है, that is with respect to the actual object. So for example, you're saying कि, are you saying कि
ये जो आपने बेटे या बच्चे वाली बात की, so now what is the nisarana in the context of that, for example? Is that okay? You have tasted the suffering because of attachment to a son. So if you have other children or other family members, be careful. Look after them, care for them, don't get attached. So that is the teaching we get from that experience. So nisarana is not nisarana from the roop itself. Nisarana is nisarana from the upadan. Rag, chanda rag. It's the attachment to the rupa, seeking the delight in the rupa. तो word बहुत clear है ना, छंद राग विनयो, छंद राग पहाना. जो चॉइस हमारी है, जिसके प्रति हमारा राग है, जो हमको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, उसको राग को प्राप्त करना है. So that these are the three dimensions not of the this object itself. Yeah, you don't have to throw away the object. You don't throw away your children. You see them, you take care of them, do everything which you were doing otherwise, but now you don't have attachment to that sense. You don't take it as me, mine, and then suffer the consequences of that understanding. So nisarana is with respect to chandra, with respect to desire and lust. ऐसा है. Yeah. Clear है इसमें. यो रूपस्मिन छंद, इस रूप के प्रति जो छंद और राग है उसको त्याग करना, उसका प्रहान करना, ये रूप में निस्सरण है. पर ये बहुत एब्सोल्युटली क्लियर भगवान ने हमको समझाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. And then similarly, danger is not with respect to the object. Yeah, it's with respect to the gratification, seeking gratification in the object. So in case of the son, what is gratification, for example? Yeah, that you get so attached to the child, and that only that you seek all your satisfaction from that relationship. Especially if the child is really obedient and extremely nice in all various dimensions, then you tend to get more and more attached. If the child is rebellious and strong and stiff, the attachment is lesser. That's a human personality. Okay, so no, but just so that's how that gratification becomes stronger and stronger. Attachment becomes stronger and stronger. So you feel very happy in the company of the child, and you see that as a very important part of the life. Sounds pretty cruel. I'm just trying to make sure कि हम उसको ठीक से समझ रहे हैं, because we tend to apply these to the object, and I think that is the mistake I'm trying to just at least myself avoid. You know, that's the issue. We don't, as I said, with respect to human beings, for example, the problem is with the attachment, not with the human beings themselves. Problem is with identification. He's my son and he should do this. And if he happens to do this, then you get more and more attached. How nice he is, how wonderful he is, what a nice person he is. And you feel drawn more and more. And in a very surreptitious manner, you develop strong attachment to him or her, whatever the case may be. So you tend to seek delight only in that. Very great portion of life's purpose, I know many people have that as the purpose of their life. So it sounds cruel, but that's the way I understand it. And if there is any comment to the other exercise, I'm very grateful for any suggestions on that point. So the Aswadan could also be in the other direction. That is a kind of aversion because of somebody. I mean, technically one could say, but the way Buddha defines it is very clear. That's why I'm not venturing into that. He says the pleasure and happiness that arise from rupa, that is gratification. Yeah, it says the pleasure and joy that arise in dependence on material phenomena. That's okay. Yeah. He's not saying the material phenomena itself. He's saying
The pleasure and happiness that arise I from understand that. the difference. You see, we have a tendency, for example, of tanha also. I have been doing it. We have been defining it as both craving and aversion. But the way Buddha defines it is with respect to craving. It's a very clear description. Aversion is seen only because you're craving for something, therefore you don't like it. But definition-wise, canonically, tanha is yayam tanha ponu bhavika nandi raga sahagata. That's the definition on the canon, everywhere. Everywhere that. Then further subdivisions is done. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. That's a further subdivision is being done. And all of them are attributed to our tendency to seek pleasure. And if that gets thwarted, then the other thing happens. So the definition wise, from the canon perspective, this has been a very important finding for me also. Because traditionally we have been saying that, yeah, tanha means both craving and aversion. But yeah, it is in the spirit of it, it's fine. But in the strict canonical terms, that's what Buddha defines. And there are very strong reasons for it. I can see it very clearly. Basically, aversion is happening because there is craving for something opposite of that. Yeah, that's right. Yeah. So he's pointing out to us where our weakness is. The hedonistic tendency of seeking pleasure. That's the real weakness. So you realize how blessed we are to be reading the teachings of such a great teacher who could really choose the word so carefully that we often overlooked. I mean, I've been overlooking it. Yeah, of course, that is it. But then he's defining bhavatanha, vibhavatanha also, and vibhavatanha means that. Yeah, of course, we can interpret it in that manner. No doubt about it. But if you follow this sanctity of Buddha's teaching, there's a great value in it, certainly. Thank you. It's a new insight for me, actually. सर मेरे को ये तीनों जो चीजें है वो 4 आरएसएस के बाद क्यों दी गई है? Yeah, let me see if anybody can answer. Good, very good. Any guess? Of course, there's no Buddha has never specified ये मैंने इसके बाद क्यों दी है. What's the question? ये कह रहे हैं कि ये 3 बातें भगवान ने 4 पहले कह दिए, अब ये 3 कह दिए, इनको पहले क्यों नहीं कहा? Or anything of that kind. हाँ जी. That logic behind itself putting is a them teaching. After 4. Yeah. After 4, what is the logic? You mean origin, cessation, way to the session? वो उसकी बात कर रहे हैं. Yeah. कि ये 7 बताए, 7 का एक सीक्वेंस दिया ना, पहले 4 वो थे जो हम अभी तक चर्चा कर रहा है, उसके बाद ये कहे. अब उसका क्या रीजन होगा? We can all have intelligent guesses what we want, because it is not spelled out clearly anywhere. We can make our own intelligent guesses. But साहब ये जो 3 हैं ये तो और सूत्रों में भी आते हैं, not connected with these 4. ये जो framework है, gratification, danger, ये तो कई जगहों पे आता है. बहुत जगह आता है, everywhere. It's not limited to this sutta. Yeah. There is a common teaching for clarifying our practice. कि भाई जहां पे मुख्य बात क्या है, जहां पे तुमको सुख मिल रहा है उसमें डेंजर देखना. Correct. So it is a process which is come before cessation. The path ka, when you say there is a path leading to this towards the cessation, so it is in the process of understanding the path. We encounter all these things: danger, gratification, danger. So it is before that, but it is always जहाँ पर मैंने देखा, जिनके सूत्रों में देखा है, वो तीनों बाद में दिए गए. I will put it in a simple manner. It is for lubricating the path. Again, the path is already been seen, but it is seen, not completed. Path has been seen, but it has not been fulfilled. We are getting into difficulty in the path. We can probably say that understanding those 4 ayams
will help us more conveniently to do the Nisaran, because we understand the origin, and the I don't know. That's the feeling I have, because you understand the impermanent nature of things also from that perspective. See, if you see from a purely teacher's point of view, suppose वो ये कहते हैं रूप से आस्वादन को जानना चाहिए, तो प्रश्न होता भाई रूप क्या है? Correct. And then, so he first defines what is रूप, what is its origin, and then how did cessation, and then the path, and now he also gives the additional support to us कि भाई जो path है उसको follow करने में दिक्कत यही है, because this is a practical teaching, you know. He's saying कि उसमें दिक्कत यही है कि आप रूप के प्रति आस्वादन लेते रहते हो, path की तरह ही follow करते रहो. In a way, when we see because you'll not be able to, you'll not be able to follow it properly. As long as you keep on having, as long as I keep on having the desire to gain gratification from any of the khandas, not it just applies to every khanda actually. As long as I have the desire to take gratification from any khanda, the possibility of eightfold path getting consummated is not there. It will just not get consummated because Tanha is in a subtle form. I'm holding on to that. In a very subtle form, I'm holding on to it. I'm not investigating that important part of the mind. Because Buddha realized, any realized teacher would know that हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम सुख की तलाश में रहते हैं. तो वही तो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, तो हम तो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई वो कोई एक बहुत महत्वपूर्ण. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो अगर आप 4 आर्य सत्य को कंप्लीटली फुलफिल कर दें, यू विल गेट इट. दैट्स व्हाट द फर्स्ट टॉक्स अबाउट, है ना. धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में तो ये तीन, बाकी तीन है ही नहीं बातें. बिकॉज दोज आर बीइंग गिवन टू पीपल हु आर रेडी. तो वहां तो एब्सोल्युटली ड्राई वुड है, वहां सिर्फ स्पार्क लगाना है और आग लग जाएगी. हम लोग वी आर वुड डेप्ड इन वाटर, पानी में डूबे हुए हैं. तो कह रहे पहले पानी से बाहर आ जाओ. पानी यही है कि हम उसमें आस्वादन ले रहे हैं उस पानी का. ये बात जैसा मुझे समझ में आता है, I'm just saying it. I'm not, I cannot read what Buddha wanted to say, but I'm just, my way of understanding it is this, कि मैं पानी में डूबी हुई लकड़ी हूँ. मैं पानी से पहले बाहर आ जाऊं तभी स्पार्क लगेगा. मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पानी में रहते हुए स्पार्क नहीं होने वाला है. और वो पानी यही है, आस्वादन का टेस्ट लेना, सुख की तलाश. दैट्स इट. 5 खंडों में सुख ढूंढना. जब तक मैं वो करता रहूंगा, आई विल पे लिप सर्विस टू द पाथ, बिकॉज माय अंडरस्टैंडिंग. जी. एक मैंने एक्चुअली, जब मैं इसे प्रैक्टिकली देखती हूँ, मतलब मैं उस एस्पेक्ट पे थोड़ा सा मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. कल मैंने क्लास मतलब लाइक हम लोग यहाँ पर आप लोग सब इकट्ठे हुए और मैं नहीं थी. So I was in a mall and I was looking for I was buying some clothes for my sister, and in the meanwhile I encountered one store where I found, मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा. तो it was definitely a gratification was very apparent. क्योंकि लेकिन 7 बज गए थे और मेरे को लग रहा था कि I am not attending, so at least I should be able to hear on YouTube or somewhere. तो वो मैंने वहां पर दुख का तो एहसास हो गया. ठीक है, अब मैं इसको ऐसे आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग दिस इंसिडेंट in all 7 aspects of what we are teaching. So just hear me out. If my understanding is okay or not. So दुख तो नजर आ गया मुझे, लेकिन फिर उसके बाद में निरोध के लिए मैंने सोचा कि निरोध तो अभी मुझे क्योंकि मेरे को मतलब उस वक्त कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए थे कि तो आई वाज नॉट एबल टू सी माय सिस्टर. सो somehow I was not able to YouTube नहीं ऑन किया था. अब इसमें इसी प्रोसेस में you can see कि there is a दुख and there is a when you see a stuff बहुत अच्छा लग रहा है and you are not able to buy, और
फिर तो स्वादन मतलब डेंजर और ग्रेटिफिकेशन ये बिल्कुल अपेरेंटली मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन स्टिल जो मैं कहूंगी कि जो खतरा मतलब उसके बाद जो व्हाट इज द थर्ड पार्ट, आई एम फॉरगेट, निस्सरण, एस्केप। नहीं सर, एस्केप। सो एस्केप के एस्पेक्ट में तो फिर एस्केप में तो सिर्फ यही रहा कि मैंने आई कुड मतलब मैंने सोचा कि मैं बाद में आई विल कम, आई दैट वाज नॉट माय प्रायोरिटी। सो तो जो मेरे को जो चार आर्य सत्य में बात करते हैं, तो चार आर्य सत्य में तो जब मैं वे की तरफ जा रही हूँ तो आई एम एनकाउंटरिंग ऑल दीज थ्री थिंग्स इन द वे, ऑन द वे, सॉरी। तो इट इज नॉट, आप समझ रहे हो, मेरे को अभी ऐसा नहीं कि मुझे फॉर्म से कोई डिटैचमेंट हो गया है, बट आई एम आई एम सीइंग थिंग्स एज ग्रेटिफिकेशन डेंजर, बट आई एम स्टिल having some attachment towards form, because I have a wish to go there one more time and see it properly. So I see this as a, I'm on the way, but I hope so, जो मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे को चार आर्य सत्य में जो चौथा आर्य सत्य है उसका मेरे को अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बट फिर भी मेरे को आई एम ट्राइंग टू रीच देयर। See, when we talk here of gratification, we don't mean the momentary arising of craving and passing away of craving. That has its own role. That can be handled according to the Satipatthana advice. That's true, no problem. We are talking of the tendency to seek gratification. कि मुझे कपड़े ही खरीदने हैं, मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया कपड़े होने चाहिए, मुझे लगता है कि उसी से मुझे सुख मिलता है, then it is a real issue. We're not talking of getting immediate problems, arising of craving, arising of aversion and cessation of craving. Those are phenomena which we already dealt. आपको याद होगा हमने जब वो discussions किए थे personal identifying each part, Vedana, Sanya, Sankhara and all that. That we have already sorted out how it has to be done. Of course, we'll revise it that also. But those are momentary events which are arising. जैसे हमने महाभारत की situation का analyze किया था, complex situation को. So then we see कि हाँ किस तरह से perception बना, किस तरह से वेदना हुई, किस तरह से reaction हुआ, and what you are saying falls in that category. है ना? So we can analyze it in that manner, which is very good, which is basically dependent origination and Khanda analysis. Very good. But what we are putting up here is the stick is dipping in water. वो गीली पड़ी है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आस्वादन की टेंडेंसी है कि वो कपड़े ही खरीदने हैं। मेरी अलमारी में 200 कपड़े पड़े हुए हैं, मैं पहनता तो 5 ही हूँ, लेकिन 200 रखे हुए हैं, और जब भी कोई नया आता तो मैं देख लेता हूँ। मैंने कुछ देख लिया फेसबुक में नया कपड़ा, चलो इसको भी ऑर्डर कर दो, चलो इसको भी ऑर्डर कर दो। Now that is the real suffering, and that we are not able to see. So the Buddha is compassionately pointing out to us कि देखो कहाँ पे तुम आस्वादन ले रहे हो, कहाँ पे मजा ले रहे हो, कहाँ पे सुख ढूंढ रहे हो वस्तुओं में। कपड़े is a very common example. I can say it very confidently based on my observations. Very strong. अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों की, कितने पहनेगा कोई? That is the real issue, no? Which has a tremendous hold on our consciousness. हमारी स्वरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको होल्ड करके रखता है एकदम। Powerful soldier of Mara, hitting us all the time and we don't even see it. So that's why he's very kindly pointing out, तो danger देख लो बेटा, और कुछ नहीं है, ये कह रहा है। भगवान सिर्फ इतनी सी बात करें, हाँ जो सुख मिलता है वो उसको आस्वादन कहते हैं। वो नहीं कह रहे आस्वादन बुरा है या अच्छा है, वो कहीं नहीं कहा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर खतरे को देखना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है आस्वादन को जानना चाहिए, परिन्याय, उसको वो जानना चाहिए, है ना। और दूसरी स्टेटमेंट है फिर उसके खतरे को भी जानना चाहिए। ये बात, ये उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। आउट ऑफ हिज ग्रेट कंपैशन इज टेलिंग अस कि भाई वो तो अच्छा है तुम आस्वादन कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट उसमें खतरा भी देख लो।
कोई खतरा देखोगे तो अपने आप सुधर जाओगे, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खतरा देखोगे तो उस खतरे से दूर भाग जाओ, खतरा नहीं देखोगे उससे दूर क्यों भागोगे? ये बात है, जहां तक मेरी समझ में आता है ना, ये मुख्य बात है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सबके लिए, सभी साधकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम समझें कि कहाँ हम अटक रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खतरे के प्रति सजग नहीं हैं, हम उसको क्यों छोड़ेंगे यार? क्यों अटैचमेंट को ड्रॉप करेंगे उसके प्रति? व्हाई शुड वी गिव अप? जब मजा ही मजा आ रहा है, एंड आई हैव एनफ मनी, आई कैन बाय अ ड्रेस एवरी वीक, एवरी मंथ, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। आपको क्या परेशानी है? कोई मुझसे पूछेगा तुम्हें क्या परेशानी है, अच्छा ठीक, खरीदो। बट अगर हम साधक है तो हम ये सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ही सेइंग, दैट रूपा इज इम्परमानेंट, सफरिंग एंड पेरिशेबल, दिस इज इट्स ड्रॉबैक, यम रूपम अनित्यम दुखम विपरिणाम धम्मम अयं रूपस्य आदीनवो, ये रूप का खतरा है। There's something which as his children we think, यार क्या कह रहे हैं हमारे धर्मपिता, क्या कह रहे हैं हमको? And the moment we realize it की value of it, then we will definitely, यार ये तो खतरनाक चीज है, इस तरफ तो नहीं जाना चाहिए हमको। हमको रूप में आस्वादन देखने को हटना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, आगे बढ़ने की जगह पीछे हटे। That's it. Everything else will fall in place. You are saying that it is works at the macro level, not at the micro level. That's what you're saying. कि मैं Yeah. छोटे level पे नहीं, बड़े level पे बात करूंगी, तब then I should go and dissect, मतलब आप इन तीन जो चीजों के perspective से आप देखिए। But मतलब sorry to differ sir, but मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे हम बुद्ध की शिक्षा को इम्प्लीमेंट करते That हैं, we are doing ना, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। At this moment we are not doing it, बेटा। At this moment we are doing रूपा, we are analyzing it in detail. मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे तो हमने पिछले कितने 8-10 सेशन इसी में लगा लिए थे कि हमारे भीतर किस तरह से हमने कुछ वीडियो देखे, फिर हमने कुछ म्यूजिक सुना, फिर देखा किस तरह से राग जागा, फिर किस तरह से द्वेष जागा, किस तरह से उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हुई, उसके पीछे क्या परसेप्शन था, संज्ञा क्या थी, वो तो हम कर चुके हैं ना, और वो फिर आगे भी करेंगे। तो अभी हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जो कि हमारी नजर से छूट जाती है, कि रूप मटेरियल फिनोमिना के प्रति हमारा जो टेंडेंसी है टू सीक प्लेजर इन दैट, और यू कैन से वेरी रफली वर्ल्डली हैप्पीनेस के प्रति जो हमारी टेंडेंसी है, परसूट ऑफ वर्ल्डली हैप्पीनेस, उसके अंदर हम खतरा नहीं देखें। ये भगवान कह रहे हैं कि उसमें खतरा देखोगे तो फिर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो यू कैन कीप ऑन पुटिंग फायर इन दिस वाटर, भीगी लकड़ी में कितनी भी आग लगा लो, वो सुलगेगी नहीं। सुलगे का मतलब उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रियली हो नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी सर बात आई है। स्टिल वुड से कि जो मैं कह रही हूँ वो चार आर्य सत्य के पहले वाली स्टेट में ये तीनों को इम्प्लीमेंट Fine. करने में तो आई डोंट नो बट आई एम स्टिल exploring. Yeah, sure. But Certainly. Certainly, you should really explore it further and see what is being said. You know? The fact that micro level phenomena are important is not denied, of course. It is at the micro level that the craving arises. But we are not talking here that. We are not going into the mechanism by which we are causing craving for it. We know that mechanism. किसी कपड़े के प्रति हमारा अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, उसको देख के, सुंदर कपड़े को देख के प्रिय वेदना जागती है, उसके नहीं प्रति सर, राग ये जागती है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि चार आर्य सत्य के बीच में ये जो तीनों चीजें आ रही है, ये चार आर्य सत्य के बीच के इंक्लूसिव ऑफ फोर नोबल ट्रुथ्स है। इट इज नॉट बियॉन्ड दैट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस एग्जांपल। Yeah, you can interpret it. You can say Tanha is this what is being said? Yeah, fine. There's no doubt about it. Yeah. If we define if we see Tanha as defined there, कि जो कभी यहाँ कभी वहाँ सुख देखती है, this is what is being said. But here we are being pinpointing it with respect to material form. That's the point. Okay. The Tanha can arise. Tanha is arising with respect to the various
फर्स्ट नोबल ट्रूथ की जो इश्यूज हैं उसमें आता है कि पहले आर्य सत्य में दुख है, तो अब उसमें अल्टीमेटली दुख का कारण 5 खंडों से उपादान है। तो रूप खंड से उपादान है, रूप खंड से उपादान के प्रति तृष्णा जाग रही है, तो वही बात यहाँ कही जा रही है। यू आर राइट इन दैट सेंस, but it is being highlighted. That's the point. It is being highlighted as a very important reason which we lose in the macro picture, which we can lose in the micro picture. Because if you see everything phenomena as arising, passing away, it has its value, very good. But the bigger picture is lost. We think we हर चीज को हम यही कर लेंगे, जब जागेगी तो हम देख लेंगे, वो निकल जाएगा. Of course it निकल जाएगा, लेकिन राग खत्म नहीं होगा. आप के अंदर जो उसका जड़ है वो पड़ी हुई है, सुख की चाह की जड़ पड़ी हुई है, उसको हमने ड्रॉप ही नहीं किया. हम सिर्फ राग जागा, उसको हमने देखा, वो कम हो गया, राग जागा, वो देखा, वो कम हो गया. लेकिन राग का जो कारण था वो तो हमने पकड़ा ही नहीं. कौन सी तृष्णा थी जो उसके कारण राग जागा? क्योंकि राग जो उसका रूट जो है दूसरा आर्य सत्य है ना, कि दुख का समुदय जानना चाहिए. दुख का समुदय है तृष्णा, और उसको हम कितना डिटेल में आइडेंटिफाई कर, एक जनरल वर्ड है तृष्णा तो, है ना. अब हमको आइडेंटिफाई करना है तृष्णा किस पे जाग रही है भाई, है ना. रूप पे जाग रही है, शब्द पे जाग रही है, गंध पे, जैसे बनते जी कह रहे थे गंध पे जाग रही है, then we have to handle them, isn't it? But since we are handling those independently through Vedana and through other means, we thought we'll put that aside for the time being. We're just putting it aside for the sake of convenience. In reality, all of this will happen simultaneously. तो वो हम जब हम इसको conclude करेंगे सारी series को, then we'll do some real tough exercises where everything is happening, and then we'll see how much we have really understood the whole teaching. Okay? Right. Thank you, sir. Does it make sense, Puna? जी बिल्कुल sir, बिल्कुल. Thank you, sir. Okay. 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 Any other comment, or should we go? कितने बज गए? Oh, it's already. सुरेल जी कुछ कह रहे हैं, maybe you can listen to him. हाँ जी, हाँ जी. Small question. Where does the attachment to memories of someone fit here? Attachment, memories of a person, or maybe some similar things. Memories are not रूपा. हाँ, वही मैं सोच रहा था कि रूप में आएगा या कहीं और आएगा. रूप में नहीं आएगा. It'll come in. It can come partly in sanya. So we'll discuss it there at that time. जी. Thank you. Memories का कोई वो clarity कम है some text में. It was generally associated with sanya, but also with as a sankhara. So you have to see where we put it. एक बार आपने define किया था ना, thoughts including memories are sanya और sankhara और vipak. Remember? Yeah. So we have to उसको distinguish करना थोड़ा. Subtlety का काम है. हाँ जी, एक और हाथ खड़ा हुआ है. कई दफे ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपको याद आता है, ध्यान आता है, मगर दुख नहीं होता है. Yeah, of course. Certainly. It's not necessary कि आप किसी प्रिय के जाने के बाद उसको याद करके दुखी हो. Not at all. It's not necessary. It depends on what is the extent of our acceptance of that fact, and what is the extent of our practice. If we really understand anicca strongly, then it's okay. In fact, one can remember the good qualities of the deceased person and the good things he or she may have done for us and feel grateful. So that has a very positive effect on us. So remembering is very helpful. If you do a wholesome remembrance, it will be very helpful, especially remembering the good qualities of the deceased people.
even if they are quote unquote untimely deaths. या सही बात है, मुझे यही लगता है कि या untimely death and very close to you, very close relationship होती है उसमें भी, और something like an animal जो आपने कुछ महीनों के लिए ही उसकी देखभाल की है, और for some reason the small animal passes away, तो that particular time पे exactly that time पे तो पेन होता है। अगर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो तकलीफ नहीं होती है, मगर उसके ध्यान आता है। Yeah, that's perfectly fine, I think. As long as we don't want to repeat that hymn, said we want to seek the pleasure again in that direction again and again and again. That's gratification का मतलब है that we base our pleasure only on that particular kind of object and then we try to replicate it. एक बार से एक object चला गया, चलो एक और चला गया, फिर एक और. That is where the gratification becomes very strong. That's but in some cases you do not do it because you want to, you are attracted, but because something comes your way and then you don't want to neglect, you try to take care and look after. Sure. ऐसे भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल. Then I do not go out seeking for it, but then it just somehow it happens that it's there. Our karma creates conditions for us to attract appropriate conditions for us, which will help us to grow. That's my strong understanding of the whole teachings of the Buddha. Okay, the situations which we experience in life are just the right for us to evolve spiritually, provided we look at them in that proper manner. So nature creates those conditions again and again. Dhar Sahib, yahan to not dilute this sutta, the whole point here is, what am I seeking? So let me not dilute and divert myself in other things, rather focus on this. Can I actually seek? That's the real issue, isn't it? Baki cheezein to humne discuss ki hui hain. Yeah. So that is a key issue, that material domain mein hum happiness seek kar rahe hain kya? Kahan seek kar rahe hain? Yeah. And we pinpoint it. We pinpoint it. And then see why exactly are we able to realize the danger in that? And using that understanding of danger, are we in a position to work towards giving up the desire and greed for that? It's very straightforward teaching. I didn't quite follow. दरअसल मुझे लग रहा है ये दिक्कत हो रही है, ये जो माइक्रो मैक्रो वाला है ना, I don't think it's very clear, to be quite honest with you. So if you notice, many of us are still going off on these tangents, so maybe we need that to be consolidated, you know. मुझे भी ये लग रहा है जो ये कह रही है ना. I'm not sure it's so clear कि हमें क्या ढूंढना है इसमें. तो आप ग्रुप्स बना दोगे ना, फिर हम इन्हीं में हम खोए रह जाएंगे. That's my sense. Okay. Let me try again. I'll try. देखिए, हम लोगों ने ये शिक्षा ग्रहण की है इतने 2-2.5 महीने में कि किसी भी इंद्रिय पे स्पर्श होता है तो उस पर वेदना जागती है, वो संज्ञा पे डिपेंड करती है, फिर उस पर तृष्णा जागती है. अगर हम सजग रहें तो वेदना के प्रति तृष्णा नहीं जागेगी और हमारा संस्कार जो है धीरे धीरे कम होते चले. हमने सीखा है एंड इट्स परफेक्टली राइट. यहाँ पे वो चर्चा नहीं हो रही. जैसे मैंने निवेदन किया था कि हमारे मन में राग जागा किसी परिस्थिति में, हमने उसको देखा और उसको ड्रॉप कर दिया, वो भी ठीक है अपनी जगह, बट उसकी भी चर्चा नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है कि हम हर एक खंड के बारे में ये बात करेंगे. रूप खंड के बारे में हम ये बात कर रहे हैं खास तौर पे, क्योंकि रूप खंड जो है बहुत डोमिनेंट इफेक्ट है हमारे पर, कि रूप खंड के प्रति किसी भी रूप के, किसी भी तरह का रूप, we consider the material phenomena other than the subtler ones. तो वो जो material phenomena है उसके प्रति क्या हमारी tendency है to seek gratification in that? This is the thing to be reflected upon and identified.
It could be seeking tendency in family members, gratification in family, in animals, in jobs, in things, clothes, food, car, phone, laptop, whatever, all kinds of things. Now that needs a pretty reflective mind, because कई बार हमको ये लगता है ये तो जरूरी है, ऐसा थोड़ा ना, ये नहीं चाहिए क्या हमको, लैपटॉप नहीं चाहिए क्या, फोन नहीं चाहिए क्या, कपड़े नहीं चाहिए, we're not saying चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हम सुख उसी में ढूंढ रहे हैं, ये बात। आस्वादन का मतलब है हम उसको उस आधार पे हम अपने आप को सुख की तलाश हमारी उस डायरेक्शन में काफी स्ट्रांग है। कोई ये बाकी सब चीजें आवश्यक हैं आजकल के जमाने में, वी नॉट डिनाइंग कि फोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए या कपड़े चाहिए या भोजन चाहिए, वी नॉट डिनाइंग दैट, वी आर सेइंग हम क्या उसी में सुख ढूंढ रहे हैं, किस चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं। इट कुड बी इवन अ जॉब, नाउ यू मे क्वेश्चन कि उसमें नहीं सुख ढूंढे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये वो, वी आर नॉट सेइंग डोंट डू जॉब, वी आर नॉट सेइंग दैट, so please don't misunderstand, we're not saying don't take care of your family, we're not saying that. Buddha is not telling us anywhere that. He in fact gives all kind of discourses on householders. The point being made is that has become so, we have become so much attached to that particular object that we seek all our gratification from that, क्योंकि वो हमसे pleasure, object वो हमको pleasure देता है, तो हम उसी के अंदर उलझे रहते हैं, उसी के अंदर उलझे रहते हैं, और एक के बाद एक उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो चीज बदल भी जाती है, फिर हम नहीं ले आते हैं, फिर बदल जाती है, फिर नहीं ले आते, और we can't see gratification in that because we don't see the danger, though the danger manifests itself because of the impermanence does manifest itself, but still we want to, because as far as objects are concerned, we can always get another object, another object, another object. So that is the point being made, that we should sit quietly and reflect कि कौन से रूप हैं, कौन से मटेरियल फॉर्म हैं, मैटर है, मटेरियल चीजें हैं जिन पे कि हम, हमारा सुख डिपेंडेंट है, हम उसमें ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं। पहले हमको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए क्लियरली, then we should move to the second stage of identifying the danger inherent in it because of the basic characteristic of impermanence and the suffering resulting from attachment, which we can easily understand. And then once we understand the danger thoroughly, then the tendency for moving out of it will become strong. We'll really be motivated to come out of it, to give up the attachment to that object. So that is the key thing. We are saying object, it doesn't mean we want to throw the object. It means objects with which we get attached, in which we seek happiness, sensory happiness, जो हमारी hedonistic tendencies है, भौतिक सुख की जो tendency है, उसको हमारे को question करवा रहे हैं भगवान in all his compassion कि भाई उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, अलग से कैटेगरी बना के उसको कह रहे हैं। आप कह सकते हैं ये तो चार आर्य सत्यों का पार्ट है, हाँ ठीक बात है पार्ट, so what? Buddha is asking us to do that must be for some reason, because of the great importance of this. And so in this particular format he is asking us to do, format भी उन्होंने बना ही दिया है अपना, तो पहले तो भैया ये समझो कि आस्वादन है, परिन्याय, the words are so carefully chosen, I really bow down to the great person. एवं रूपस्य आस्वादन अभिन्याय, इसको जानना चाहिए, ये रूप का आस्वादन है, भौतिक पदार्थ के आस्वादन को जानना चाहिए, फिनिश्ड। वो ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है, अच्छा है, ये है वो, उसको जानो तो सही। देन सेकंड सेटअप, एवं रूपस्य आदीनवं अभिन्याय, अब ये भी जानो कि उसमें डेंजर क्या है, अपने आप ही जान लो। यहाँ पे इस केस में नहीं, फिर वो आगे जाके उसकी डेफिनेशन बताते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप, एवं रूपस्य निस्सरणं अभिन्याय, उसको जानो, उसमें एस्केप है। You can put it in the Four Noble Truth paradigm, of course, but this is specific advice for a specific purpose. क्योंकि रूप के प्रति वो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, इसी तरह वेदना के प्रति कहा जाएगा, फिर उसके प्रति, एंड दैट विल कंप्लीट, दैट इज अ वे ऑफ
पुटिंग द टीचिंग इन येट अनदर फॉर्मेट, वो अलग अलग फॉर्मेट हमें देते रहते हैं, अनदर पैराडाइम देते रहते हैं, किसी को वो अपील करता है, किसी को ये, किसी को वो, और जो कॉम्प्रहेंसिवली करना चाहता है ताकि उसको कहीं कोई डाउट ना रहे, उसके लिए कहते हैं सातों तरह से करना चाहिए। दैट्स से उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, उसको केवली कहा जाता है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग यू कि जो ऐसे करता है उसको ये कहा जाता है। वही कहा जाएगा कि वो ते सुपटिपन्ना, वेरी क्लियरली सेज दोज हु प्रैक्टिस लाइक दैट, रूपस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुपटिपन्ना, वही है जो अच्छी तरह से प्यार। तो जब हम सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग है, तो यही वही वर्ड है सुपटिपन्ना, जो इसके आधार पे, इन सब चीजों के आधार पे रूप के प्रति निर्वेद भाव, उसके प्रति डिस्पैशनेट, उसके प्रति डिसएंचेंटमेंट, उसके प्रति सेसेशन का पाथ पे चल रहे हैं, वही सच्चे पाथ पे चल रहे हैं। ते सुपटिपन्ना, ये जो सुपटिपन्ना है, ते इमस्मिन् धम्म विनय गाधन्ति, वो इस धम्म विनय में स्थापित हो रहे हैं। वेरी अथॉरिटेटिव प्रोफाउंड स्टेटमेंट। और जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो आप स्थापित हो गए। Then you are called an उत्तम पुरुष, you are called केवदी, you are called who has become the consummate one, जिसने सारी टीचिंग को पूरी तरह से, कहते हैं ना कथम बुद्धस्य शासन, आपने भगवान की शिक्षा को पूरा कर लिया है। So that is the promise which the Buddha is giving us, and it's worth following it up. It may be a repetition of Four Nobles, it doesn't matter, but it is specifically clearly spelled out what exactly is to be done, not in a general term of tanha. Specifically, this, focus on that now. Then we'll say focus on Vedana, then focus on Sanya. We not do that. When we do it in a comprehensive, in the manner of the usual practice of Satipatthana, we just do it. That has its own value. I'm not depreciating it. I'm pointing out the importance of that. This is very powerful teaching for us, because ये हमको directly hit करेगा। जब हम बैठ के चिंतन करेंगे कि क्या चीजें हैं जिसमें मैं आस्वादन लेता हूँ, लेती हूँ, तो मालूम पड़ जाएगा। अगर हम सचमुच में ओपन माइंडेड हैं, इन्वेस्टिगेटिव माइंडेड हैं, तो मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे इस चीज के प्रति, इस रूप के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, और मेरा सारा लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। Put it that way. कई बार ऐसा होता है। My whole life is revolving around one person. It could be son, it could be husband, it could be anybody. So we have to see that really. That's what he's trying to tell us. Please look at it carefully. Sir, I just want to ask you, see today, I don't know why, today the morning I was just reflecting on attachment to a certain people. Okay, so I could not do this dissecting as such. But मुझे एक बात याद आया, Ajahn Sumedhu's book, Don't Take Your Life Personally. I like it, but I don't want it. Can we have that kind of an attitude and look at it? You see, I again repeat, we are not I mean, the attitude which you mentioned is perfectly fine, of course. But I mean, it depends on what you mean by liking. Yeah? It depends on that. Or what does the word like mean? Seeing the danger in it. That's it, liking, na? But liking to nahi kehte na. Because this is going to create only suffering as such in that manner. And so that's not called liking. That's called something else. No? The issue is, so the liking is not converting into wanting because of seeing the danger. Perfect, that is true. But what is liking? Is it experience of the feeling, the Vedana? Then I would understand, yeah, that there is a pleasant feeling and I am seeing the danger in it and not converting it into the Tanaha. Perfect, fine. I'm not getting it into, I see the danger and therefore I'm escaping from it. That's perfectly fine. But we're not focusing on one particular event or incident.
Sir, we cannot hear you, sir. हेलो सर, आपको सुन नहीं पा मोक्षदा रहा। आपके फोन पर कुछ और आवाज आ रहा है। हेलो मैसेज कर दो उसको। पापा इससे कुछ हुआ है मेरे फोन से मेरे फोन पे मतलब कनेक्टेड ही है। आपने इसको कनेक्ट किया? नहीं कनेक्टेड ही है मेरा बंद है। मैंने तो कुछ किया नहीं। इसको हेलो, अब आ रही है Yeah, आवाज? okay, you're back now. We could hear Shruti actually. हाँ, She वो was giving ले us the गई थी ना discourse. उसको कुछ, उसने शायद बटन कोई दब गया। हमने उसका डिस्कोर्स हाँ भी जी। सुन लिया। अब अपना ही सुना दो। जी जी। तो जो चैट पे क्वेश्चन आया था कपड़ों के बारे में, जैसे मैंने कहा था भाई वार्डरोब भरा हुआ है, तो इज द फुल वार्डरोब प्रॉब्लम इन इटसेल्फ? नो, द अटैचमेंट टू दैट इज द प्रॉब्लम. Why would anybody who is not attached to clothes have a full wardrobe unless he or she is a queen? Because that is a part of the lifestyle of that person, isn't it? So it's not a question that अगर आप सिल्क कपड़े पहनेंगे तो आप मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है. That is not a question at all. There are the examples of people who became fully enlightened with all rest of conditions. There are more than one example. That's not the issue. The issue is of what are we seeking delight in. So please don't focus on the object. Focus on the attachment to the object. The object is only to identify where we are trapped. Okay? Focus on seeking gratification in that. If a king wears golden clothes because it is his duty, that's fine. He may or may not be attached to it. You know, there are stories of, in our tradition, of King Janak, who was called Rajrishi. He was supposed to be an enlightened person. And saints used to send their disciples to him. So that's not the issue of clothing. It's the issue of what is your attachment to that. How are you seeking gratification in things? It could be clothing, it could be food, it could be anything. It could be any thing which may be inconsequential to me, and but very important for somebody else. So मुख्य बात जैसे मैंने अभी पढ़ा था ना, रूपस्य आस्वादन, रूप में जो आस्वादन है, और रूप की बात इस सेंस में नहीं कह रहे कि इसलिए उस रूप को छोड़ दो. छोड़ना क्या है? निस्सरणं, उसके प्रति छंद राग विनयो, उसके प्रति जो राग है और जो उसकी हम चूज करते हैं उसको ड्रॉप करना है, उसको त्याग करना है. That is the key thing. So this, of course, there is always a possibility of misunderstanding. So thanks to Bante ji, I think we need to understand it thoroughly because before we do it tomorrow. तो अगर कोई और इस तरह का डाउट हो, please ask without any hesitation. Don't feel any hesitation. When you say taking delight, so like my question which I asked you, you asked, does it give you a good feeling as such? So my question is, if there is a delight only, automatically there is attachment to any object, anything. So that then you see the danger as. Can I stop you in between? Yeah. Please use words precisely. When you say it will give you a good feeling, that doesn't cause attachment. Feeling does not cause attachment by itself. If you react to feeling, then tanha aa raha hai. So please use, इतना सब 2.5 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं correct word use करने की. So please use correct words. Okay? Now go ahead. So don't mind it. Because no, it is, I'm still asking the same question. Yeah. So you're saying, okay, feeling, if only when we react, then it creates tanha. Okay, so that is fine. But in this thing right now, what you said is seeking delight, seeking pleasure in it as such, and then seeing the danger and dropping it. What do you mean by seeking pleasure? Let me ask you. मैंने जब कहा seeking pleasure, ये भगवान कह रहे हैं आस्वादम, उससे आप क्या अच्छा लग रहा है, चाहिए, और like it is. और चाहिए, yes, not अच्छा लग रहा है. There's a difference. चाहिए, that's हाँ. Please, that's why I'm trying to say again and again.
use correct words, not the pleasant feeling, but the attachment to the feeling, wanting it more and more. That's the Yeah. point. Okay, that's the point. So because it gives pleasure, we want it more. So we want to get gratification out of it. We want it more and more of it. That's the point. Okay? So if we use precise words, then the doubts become lesser. That is the point. Otherwise, I have no particular desire to trouble you by using conflict by So using what these. were you saying in my question? I could not hear you at all. So what did you exactly complete then? I could only hear till the feelings. उसके बाद में आपने क्या कहा था? नहीं वो छोड़ दो ना, वो तो जो कहा सुना नहीं तो छोड़ ही दो. मैंने तो दोबारा कहा, पता चला कि मेरा आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना सर. मैं समझ गया. तो तभी मंत्री ने लिखा तो मैं देखा कि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ठीक हो गई. अब जो मैंने कहा उसको महत्व दो, पीछे जो कहा छोड़. जो मैंने अब कहा वो आपको क्लियर है क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, कि हमको फर्स्ट, माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज, इट इज not because I am kind of obsessed with Pali words or everything, but because it has helped me greatly to clarify my concepts and to not get carried away by ambiguous words like acha lag raha hai. They are essentially good for beginning to identify, but once you understand it, we don't mistake it for craving, we don't mistake it for gratification. You have to see that part. Feeling is a natural phenomena. Response to that is arising out of attachment or aversion. We are talking of tanha as arising craving. If कोई चीज पे हमको सुख मिल रहा है और हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं more and more, that's what is meant by gratification. आस्वादन कर रहे हैं. वो ये नहीं कह रहे कि वो आपको कैसा लग रहा है, वो कह रहे उसका आप आस्वादन कर रहे हैं. आस्वादन होता है उसको खा रहे हैं, किसी चीज का स्वाद लेते हैं तो खाते हैं. Yeah, you wanted more of it, like chahiye. So I got that. Good, very good. That's the meaning. That is what is meant by aswada. Okay. So Trishna is already inherent in the. Yeah. Yeah. You can say, put it that way. Yeah. So the word here which has been used is with respect to is another word for the same thing. Aswadan. There will be slight nuances of it, but I don't want to get into that too much. But you can say, yeah, it is same. तो उसको जानना चाहिए, वो बात हो रही है. क्योंकि फोकस ये है कि हमारे जीवन में इस वक्त बहुत महत्व है. क्योंकि कौन सा रूप हमको अपनी ओर खींचता है, कौन सा रूप में हम अपना सुख देख रहे हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हम कहेंगे कि रूप, आप कह सकते हैं कि रूप नहीं है, रूप के प्रति वेदना जागती है, वेदना के प्रति आस्वादन. Oh, fine, that's okay. But the gross fact is that we are attached to the object. It could be a bottle of alcohol, it could be green tea. I want to take 10 cups of tea every day because I like it, and do it again and again and again. Or it could be anything else. So that is what I'm trying to say, sir. So that attachment to anything, like what I spoke about it, a person or whatever it is. So seeing that danger, this attachment is going to create suffering, and one should drop it or stay away from it, is what I was coming to that. So having this attitude as such, like, if not, I'm doing it in this breaking it into seeing the gratification, danger, or escape. I've just put it in a very simple way, like, okay, fine, this is what I like, I don't want it anymore. मुझे और नहीं चाहिए. Why don't you want it anymore? Because I see the danger in it, because it creates suffering. Why are you saying this? I don't do it like that. अभी जो occur नहीं हुआ था सुबह, तो I'm just been saying कि it didn't occur to me, it only occurred this word. So I just put it across in that way. It didn't occur to me also long before, till a few years back, a few months back, let me put it, I think a few years back, that we should look at it in this manner.
because then we had the attitude that yeah, Tana is bad. That is the attitude. Because of the teaching, we understood that's not wrong. But here is a very beautiful word provided for us. Adi Navam. ये danger है. Danger has a different connotation. हम आज सब आदमी danger से दूर भागते हैं. It has a connotation of that kind. So it motivates, it acts as an additional motivation to drop it. Okay. हमको सबको मालूम है अपने अपने अनुभव में कि जो सुखद अनुभव हैं, जो हमारे को वस्तुएं सुख देती हैं, उनको ड्रॉप करना कितना मुश्किल है, हम सबको मालूम है ना. उसको ड्रॉप करने का एक तरीका भगवान बता रहे हैं कि उसमें डेंजर देखो. That's what he's saying us. That's all. He's pointing out a method. जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. You see the danger and then you actually drop it. किसी को खतरा देखेंगे तो फिर क्यों उसको फॉलो करेंगे? So this is a method of developing insight in that in a particular fashion, looking at the danger in the sensory pleasure of that kind, coming from an object. Okay. सर छोटा सा प्रश्न, हाँ, डाउट एक्चुअली. सर मैं किसी व्यक्ति के प्रति आस्वादन है पर और मैं केयर कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट किन फैक्टर्स से या मतलब कैसे करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा अभी समझ में आया कि मैं भ्रमित था कि मैं केयर कर रहा हूँ पर वो आस्वादन था. तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि मतलब उसमें डेंजर समझ में आए और फिर उसको ड्रॉप किया जाए? I'm sorry if I'm not clear. Anybody would like to respond? So I was about to ask this, like Sammaditthi becomes very important then, I mean, to my understanding. अगर हम इन सब चीजों को इन्हीं एंगल से हमें देखना है, तो Sammaditthi becomes very important. What does that mean? थोड़ा बता दो हमको. Yeah, of course, Sammaditthi is very important. But what does it practically mean? क्या करना है मुझे? I think you don't get possessive about it. You look at it in a very detached way and do your responsibilities as such is how I will look at it. To answer Shivendraji's question. Question was, if I understood correctly, how do I know whether I am attached or I am really not attached to a person? Expectation. Yes, sir. Yeah, मैं just सिर्फ care कर रहा हूँ उनकी. I'm just caring and taking care of the person. और आस्वादन नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा जो समझ आता है कि एक में बहुत दुख है, परेशान हो रहा हूँ मैं, और एक में I'm just doing action, just taking care of the person, taking necessary action. Yeah, I think that's a very important question. So let us get some. If I can submit, because I am going through the same process, so I can say कि caring और आस्वादन में फर्क है, क्योंकि caring means you are doing what should be done in order to facilitate, and they're looking after. But you also know that the body is impermanent and anything and everything is possible. So there, the reality, is you are confronted with that reality, and so naturally there is no element of attraction or tanha there. Anybody else would like to say something? Sir, expectation as such. Sorry, Vishal ji. जी बोलिए. हाँ सर, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक मेरी मदर है, सपोज मैं उनकी टेक केयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशिएट करना है कि आस्वादन है या मतलब मैं टेकिंग केयर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आस्वादन होगा ही क्योंकि वो मदर है, उनसे इमोशनल अटैचमेंट होगा. बट टेकिंग केयर तब समझ में आएगी कि पहले से कम राग द्वेष हुए हैं कि नहीं हुए हैं, डेंजर को समझ के, मतलब डेंजर को समझे ना समझे, राग द्वेष कम हुए कि नहीं हुए, और अंडरस्टैंडिंग के साथ केयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं एक इमोशनली या रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, या फिर मेरे में दुख बहुत हो रहा है, उसकी वजह से मैं केयर कर रहा हूँ.
ऐसा थोड़ा quite difficult to answer, and I feel having got exposed to all these teachings, so the care should be out of the sense of responsibility or sense of duty. Attachment can be implicit somewhere, but the care aspect should be more out of sense of duty and responsibility. That's my viewpoint. Okay. Somewhere if you can I'll just give it some thoughts. Pankaj, you want to say? No, I was going to request Suri ji to mute because otherwise we can't hear you. दीपक जी उसको म्यूट कर दीजिए। जी, मैं सिर्फ आपके सामने वही बात कहूंगा जो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, but you may consider it whatever it is worth. Any action, any activity done out of sati and panya would be free from any gratification. You may get a pleasant feeling out of it or unpleasant feeling out of it. Doesn't matter. That's not a problem. As long as sati and panya are around. Any action done out of reaction to the situation will have some element of gratification in it. Even if it is aversion, even then there is a gratification that I am doing it for setting the person right or whatever. So that's the way I understand it, and you can kindly reflect on it and see. इस सवाल का एक तरीके से जब मैंने पूछा था अजान मुनिंदो को, उनका एक perhaps somewhat more tangible answer ये था that one way to check it is in terms of the obsessiveness or compulsiveness. So can I choose to not do this? Can I afford to not do it? Or am I really forced by my upadan to really do that action? So that was one thing he had mentioned. Yeah, but there may be situations where situations may demand action all the time. I mean, there could be, for example, a person is terminally ill in your home. क्योंकि सवाल धर साहब ये था ना कि मुझे तो लगता है मैं लुकिंग आफ्टर कर रहा हूं, अब मुझे सस्पेशन होने लगा है कि भैया ये तो उससे ज्यादा हो रहा है. लुकिंग आफ्टर इज मैस्करेडिंग as well, Aswadan is masquerading as looking after. वो शिवेंद्र वो बहुत it's a very specific thing. So we need in a sense a tangible, measurable, feelable method for myself to apply to a situation ताकि मैं इन दोनों के बीच में differentiate कर सकूं. Trouble with sati and panya is that it's a nebulous entity ना, वो दिक्कत है. So if it's developed, then sure. But if I have the doubt, it already shows me, doesn't it, Dharsab, that sati and panya is not so developed. That is why the doubt is there. Whether वो doubt होता ही नहीं वरना तो. Yeah, so one can investigate whether I'm doing it. That's what I meant. But there's another tangible measure which we have been advocating in some situations is that it's not applicable universally, but in many situations it is, that if I'm caring for a person and if that caring produces no fruit, it doesn't result in the desired effect, and if I feel bad about it, then it was being done out of craving. That's another way we have been looking at it, this also has been a helpful guide for us. कि मैं किसी की केयर कर रहा हूँ और वो केयर जो है फ्रक्टिफाई नहीं होती, it doesn't really bear the fruit I expected, and then do I really feel very bad about it and sad about it? Then there was a aswadan within it. There was something happening which I could not discern. That's another similar way of obsessiveness, जैसे आपने कहा. That has been another way which I have been assessing these things in manner. Okay. Good. Thank you very much for a wonderful discussion.